If you're watching such deliciousness on your screen, you know you're in Andhra Zook. And today I'm here with my delicious leaning tower of brownies. अगर आपको भी मेरी तरह फजी ब्राउनी पसंद है तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है. This is an amazing recipe which can impress anyone in a jiffy. So let's kickstart this recipe with some milk and butter. और इसको मैं अभी स्टोव टॉप पे रख दूंगी to heat. तब तक मैं अपना ब्राउनी पैन तैयार कर लेती हूँ. As you can see, I have taken a very simple aluminium sheet pan और इसको मैंने बहुत अच्छे से generously ऑयल से कोट कर दिया है. अब मैं about 3 to 4 tablespoon कोको पाउडर डालूंगी इसमें. इससे क्या होगा ना कि हमारा जो ब्राउनी है, एक तो वो चिपकेगा नहीं और दूसरा वो जो वाइटिश एक लेयर नहीं हो जाती है जो हम अगर मैदा डालते हैं तो होता है, वो नहीं होगा. सो दैट वे आवर ब्राउनीज वुड लुक नाइस यमी ब्राउन. अब ये देखिए मेरा बटर मेल्ट हो गया है, मिल्क भी अच्छे से हॉट हो गया है. अब इसमें मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी डाल दिया. मैंने थोड़ा सा ही इंस्टेंट कॉफ़ी डाला है, ज़्यादा नहीं. मैं ये इंस्टेंट कॉफ़ी इसलिए डाली हूँ क्योंकि इंस्टेंट कॉफ़ी से ना सडनली चॉकलेट फ्लेवर बहुत बूस्ट हो जाता है. अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, इट्स ओके, यू विल नॉट मिस इट. इट इज़ नॉट गोना फ्लेवर माई ब्राउनीज एंड टर्न इट इनटू अ मोका ब्राउनीज. I have not added that much of coffee, but if you do want to, then you can just add like another teaspoonful of coffee granules. Okay? तो इसको मैंने अच्छे से whisk कर लिया है. Look how hot and steamy my kitchen has become right now. And अभी आपके स्क्रीन में आप देख रहे हो, ये है मैंने लिया हुआ है bitter sweet chocolate जिसको मैंने तोड़ लिया है हाथ से. प्लीज़ जो भी कुछ यूज़ करें आप चॉकलेट में, आप थोड़ा डार्क चॉकलेट ही यूज़ करना. इवन अ डार्क कंपाउंड वुड वर्क इन दिस रेसिपी. मैंने काफ़ी बार कंपाउंड से भी बनाया है एंड ब्राउनीज आर एज टेस्टी एंड च्यूई एंड फजी. सो यू कैन डू दैट. ओके, सो देन यू मिक्स इट थरली. वो जो हीटेड पैन था उसके चक्कर में आपका जो चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, वो आराम से गल जाएगा. तो once you have done that, add some sugar. I have added 1 full cup of sugar and trust me, still the brownies are not gonna be very sweet because I have added bitter chocolate. Okay? So अभी आपने देखा मैंने थोड़ा सा तेल भी डाला. Yes, this recipe uses butter and oil and there is a reason why. Do make sure to visit my blog to read about it because I have written everything there. Now I have added the oil into that hot mix and then tempered the hot mix so that it's ready for the eggs. I'm gonna incorporate the eggs thoroughly before I add any other ingredients. और अब जब ये अच्छे से घुल गया तब मैं इसमें कोको पाउडर डालूंगी. अच्छा, उससे पहले तो मैं वनीला डाल लेती हूँ बट कोको पाउडर भी हमको थोड़े हल्के गरम मिक्स में ही डालना है, तो इसीलिए आप थोड़ा जल्दी करें. ये देखिए अब आ गया मेरा कोको पाउडर एंड दैट्स अ सिफ्टर. मैं थोड़ा सिफ्ट करके डालूंगी बिकॉज माई कोको पाउडर हैड अ लॉट ऑफ लम्स एज यू कैन सी एंड दैट्स द रीजन वाई आई एम गोना सिफ्ट इट. बट अगर आपका कोको पाउडर लंपी नहीं है या आपका नया पैकेट आपने खोला है तो यू कैन ईजिली नॉट डू दिस स्टेप इफ यू डोंट लाइक इट सो मच. बट येस, इन अ केक और अ ब्राउनी इफ यू कैन सिफ्ट योर इंग्रेडिएंट्स, देयर इज नथिंग लाइक इट. ऑलराइट, अब मैं स्विच करती हूँ एक स्पैचुला पे और वही सेम सिफ्टर पे मैं मैदा डालूंगी. ओके, नाउ फॉर अ फजी ब्राउनी, मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर इज योर greatest enemy. Okay, you need to add just the right amount of maida. You can't go if you go a little more than what is required, you would end up having tasty but a non-fudgy cakey brownie.
which I don't want to. So इसीलिए मैं बड़े आराम से अपना समय ले लेके अच्छे से incorporate करूँगी मैदा को. मैंने उसको अच्छे से sift भी कर लिया है. And right now I would have added somewhere around 1 cup, half a cup to 1 cup के बीचों बीच मैंने मैदा अभी ऐड किया है. एंड उसके बाद आप कंसिस्टेंसी देखते हुए बाकी एडिशन करते रहिए. ओके, थारली मिक्स करें, अच्छे से बीट करें. ब्राउनी की रेसिपी में वी शुड नॉट हैव एनी लम्प्स. ओके, यू हैव टू मेक श्योर ऑल द सिफ्टेड फ्लावर इज मिक्स्ड thoroughly into the batter. So here I have taken some chocolate buttons and some dry fruits, nuts. I've used walnuts because I love the flavor of walnuts in dark chocolate. I will coat it with 1/4 cup of maida. उससे क्या होगा कि हमारा जो टॉपिंग ये जो है the mix, the अखरोट and chocolate buttons, they will get distributed in the batter properly. Okay, again mix it properly. Your brownie batter should have a consistency like so. Alright, so once you are happy with it, pour it into the prepared tin, shake it, tap it, top it with walnut halves if you so wish to. It's optional. I have done just half the sheet pan. I have topped it with walnuts and the other half I left alone. And then you are gonna bake it for about 20 minutes till a toothpick inserted in the center of the cake comes out clean. And then you can let it cool down completely before slicing and serving. Enjoy!